So we call this the 14 channel acupuncture system. They are made up of channels numbering 1 onwards with the pertaining organ. This is the tongue system. As you can see, there are many body points. The 14 channel system is reputed to have more than 300 points. Some say it's 700 points, but let us say that it is 300 points or 365 points. The tongue system also have similar number of points, also about 360 translated points. Okay, another 300 points not translated yet to the English language. And how the points are numbered, they follow zones. All the points on the finger starts with 1 1. At the hand starts at 2 2. Forearm 3 3, 4 4, and so on. This different numbering system has made the TCM practitioners, kind of unfamiliar with tongue because of different numbering system. But believe me, the principles between the two systems are the same. They are basically based on junk food theory and the channel relationships. Large intestine channel. I'm going to demonstrate the difference. Large intestine channel. So all of us are familiar with the part of the large intestine channel. L1 at the finger, 2, 3, and so on and so on. Now have a look at where the tongue points are located and how they are numbered. 33, 0, 1, 2, 3. Why 33? Because it's on the forearm. Okay. So Master Tung has very cleverly, in fact his family has very cleverly found additional therapeutic points on the channels. And you can see the points. So 3301, 0203, because they lie on the large intestine channel, they also share the properties of all the points on the large intestine channel. But what is very exciting and useful for us is the Master Tung family has found new therapeutics, new indications. For example, here 3301, 0203, they have found that it has a uplifting, like an astringent reaction to the body. It uplifts tissues. So they have found that it's useful for prolapse. Also, commonly listed in the books, useful for hemorrhoids. Small intestine channel. Alright, I'll just take a few examples to give you a feel of how tongue system works. Small intestine channel. Alright, although different channel, but again, tongue here is listed as 33 because it's on the forearm again. Alright, so 33, 10, 11, 12. All of this on the small intestine channel, and as in most points in small intestine channel, it can treat neck disorders, ear disorders, alright, trigeminal neuralgia. But tongue system has put in extra exciting indications on these points. 3310 is inflammation of intestines. 3311, acute hepatitis, among other indications. And 3312 helps the heart function. And coincidentally, 3312 is the favorite point for knee pain among tongue practitioners. In the tongue system, although I don't really understand in full yet, any points which treat the heart will help the kidney. It is said that when you improve blood circulation, the kidney, which is the joint which kind of requires a lot of blood, will benefit when blood circulation improves. Spleen meridian. I hope everybody is following.
Spleen meridian. There are so many additional points on the spleen meridian. Why it starts with 7-7? Because 7-7 is on the leg. 77-17 is the same point as spleen 9. 77-21 is spleen 6. Many tongue points are on the same location as the 14 channel points. They share the same indication, of course. But tongue has got new indication, extra indications, which practitioners have found them useful. For example, 77-18 is the top tongue point to treat kidney disorders. So generally, this set of lines, this set of points, 17, 18, 19, 20, 21, is listed as a kidney activation line. And that's where we start to get confused and we will trouble our mind to debate why should a spleen channel, treat kidney. But when you study classical acupuncture and the channel relationship, you will find that it's true. The spleen channel can treat kidney disorders. Alright. Now, 77-18 is, apart from kidney disorder, is also the favorite point among tongue practitioners to treat frozen shoulder. Very much like in the 14 channel system, the use of stomach 38. Alright, this is stomach 77-80. So what happens in the clinic, a typical clinic for like me? Alright, I will use stomach 38, activate. If I don't get improvement, I then switch to 77-18. So a tongue system allows us that extra tool, and I'll get on to how to combine these two systems later on. Okay. Hold on, mess it up. I can't scroll now. Okay. Okay, I'm back. Now, have you ever wondered why there are no points or no channel between the middle finger and the fourth finger? I think in the Sujok system they have points, but in the 14 channel we don't have points. Why not? All right, and the Tung family has so kindly found good points, useful points for us. And in this case, nearby and Wi-Fi are two extra points, and the points are not on any channel because the Tung system are not restricted by channel only. And this was taught to me when I was in Taiwan. The indications are allergies, blood, spleen, pancreas, immunity issues, and the teacher told me strange diseases. So I asked the teacher, what is strange diseases? He said, diseases which you cannot diagnose, he says. You're not sure what it is. Okay, so he called it strange disease. But I think it's related to autoimmune disease. So I'm not actively use this point, but if I have to, I will use it. All right, because they are points on safe locations. Let's quickly look at the protocols. Protocol, how does a 14 channel protocol look like and how does a tongue protocol look like? Alright. So knee pain treatment. On the left is familiar. Acupuncturists are familiar with this sort of treatment. Alright. I'm not saying every one of us use this, but it's quite typical. If you walk into a clinic and you have knee pain, these are the points they use, and they will probably use electrical stimulation. On the right side is the tongue. Tongue system put 2 points on the finger. Finger so start with 11, 11. I don't have the time to discuss about why is there, but that is how a tongue clinic will look like. Alright, and
don't be surprised. And we always treat contralateral, which means if the knee pain is on the right, we will use the fingers on the left. Sciatica. Alright. On the left, typical TCM protocol, and on the right, again, we will use the hand. Alright. 2205 is just like stomach 36 is kind of top point for the 14 channel system. 2205 is the top point for the tone system. It moves blood generally all over the body. As I go on, I'm also going to discuss the underlying principles because I don't have the time to talk about it separately. So now I'm going to talk a bit on imaging, why the hand can treat the low back pain or the sacrum or sciatica because the imaging. Alright. In classical Chinese medicine, we have this holographic correspondence. So in this case, all points on this dorsal hand can be used to treat issues concerning the sacrum. Of course, you palpate before you put the needle, right? But that is under the methodology of tone. Treatment for migraine. Okay. Now, 6605 is stomach 43. It has the same indications, but it is useful for me too that 6605 can treat all kinds of headache. This is not the only point to treat headache under the tongue system. There are maybe 30, 40 points to treat headache, same as in the 14 channel. Side of the liver channel. Liver is on this side, 5502 is on the underside. And according to tone, you can trigger the liver from the underside. And when you trigger from the underside, is effective for eye disorders. And in classical Chinese medicine, the liver is related to the eye. So actually, it makes sense. It's not a random indication. Neck pain. 14 channel system also treat distally. Distally means we do not put 14 channel system. SI3 is commonly used for neck disorders in the TCM system. Of course, in the tongue system, we also use SI3, but we use the Achilles tendon. Achilles tendon. We use the bladder meridian right there. Alright, it looks painful, but it's not. Alright. So, I think I'll be running out of time. Alright. So to summarize, the tongue system do not needle pain areas. The tongue system likes to needle 3 needles in a row. It is a very forgiving system. Unlike the 14 channel, you have to learn point location very well. In the tongue system, you have to know your channel. As long as 2 or 3 needles or even 4 needles is on the correct channel, you will get the curative effect. Pain, you treat opposite side. Organ issues, you treat bilaterally. Alright, and there's a method called motion acupuncture, which means when you put in the needles for pain, example, ankle pain, you put the needles at the wrist, you must make the patient move. And this is called motion acupuncture. It's very like stomach 38 in the 14 channel system.
When you treat stomach 38. When you treat stomach 38, the patient must move the shoulder. If the patient do not move the shoulder, stomach 38 will not be effective. Alright, but only a few points in the 14 channel have this characteristic. But in pain system, most of the points have this characteristic of motion acupuncture. It is only powerful if the pain area is moved or massaged. So you have 14 channel and you have two. Which system do you use? Alright, now, which system do you use? Is two system better than 14 channel? No, it's not. Is the 14 channel better than the Tung system? No, it's not. Is karate better than judo? No, it's not. Alright, but a practitioner who is skilled in both 14 channel and Tung system is a more able practitioner. So my advice is we would benefit if we learn both the systems and even other systems which sometimes I use both in one sitting. Sometimes I use two on Monday, 14 channel on Tuesday. All I want is the patient gets better. And of course, you know, the patient couldn't be bothered which system you use. Another reason to learn two is the tone system believes that bloodletting is super. Bloodletting solve blood stasis issue. If you have a blood stasis issue, nothing from my point of view, nothing. Is super effective when you bleed, and it is a method which you need to learn. Right? Alright. And when a patient comes in, headache, migraine, tinnitus, anything connected to the head, and I think that there is a blood circulation problem in the head, I will bleed the ear. And the patient will say, wow, everything is so bright now. Alright. I have to rush, I know. Bloodletting has some special characteristics whereby if you have issue with the mouth and teeth, you will go to certain parts of the body and you can see from the slide. You will go to that part of the knee and you will check if there is some discoloration there. If there's some discoloration or some capillary, you then bleed that area. And if there are issues with the ears, you check. These are the areas to check on the leg if you have organ issues, heart, stomach, liver, kidney. So there are certain areas mapped out by Master Tong that you examine. And if you find those areas suitable for bleeding, then you bleed. Alright, so this is quite special that Tong has this in the bleeding system. Alright, this palm diagnosis chart used by Master Tong was supposed to be a secret, alright? But I think over the last 20 years, they released this chart and it's now freely available, whereby Master Tong used the palm to diagnose, which means he looks at the palm and he checks whether there are discoloration or the rash or a mole or it is soft and it's too hard and a bit like we use palm diagnosis, he uses palm diagnosis. Underlying principles. Okay, balancing the channel. Balancing the channels is using one channel to treat another channel. Nothing new actually, but lung is used to treat spleen. Why? Because it comes on the same name, tie-in. Both are tie-in. One is hand tie-in, one is foot tie-in. And they found, Dr. Tan found, not that he discovered, but he very cleverly put it in a nice chart for us. Alright, if you have a lung issue, go to the spleen. If you have spleen channel issue, go to the lung. Alright. If you have large intestine issue, go to the stomach. Alright. Why?
because same name, Yan Ming, Yan Ming. The other relationship is the husband-wife relationship. When you have a lung issue, you go to large intestine. This is taught in 14-channel system, but mainly they only taught the husband-wife relationship. In the balance method, there are 6 relationships. All right. So this is a bit on the balance method. Imaging system. Coming to imaging. Look at this image. All right. This is called same height imaging system. The elbow, right elbow can treat the left elbow. Lung 5 can treat LI 11 because it's at the same level. How we do it, there's a little bit of method to it. But this is the philosophy, this is the theory of holography. Alright, one part of the body can treat another part of the body. If you find it difficult to believe, then how do you believe oracular acupuncture? That every part of the body is sitting on the ear. So it's not difficult to believe that the left elbow can treat the right elbow. You try it. Every time a patient comes with a right elbow pain, you check his left elbow. You palpate his left elbow and you will find a painful spot. And the ankle pain will be relieved, provided it's not fractured, things like that. All right? And in my experience, 10 ankle pain, this point works maybe 6 times, 6 of the 10, which is very good. Okay, and elbow is the knee. LI 11 is a common point to treat the knee in the toe system. Okay, so there are more, the wrist also treats the neck. So it's not only wrist treating ankle, wrist also treats the neck. Okay, looking ahead, since this is a conference about latest techniques, looking ahead, we have to talk about fascia. Alright? Fascia is the latest development now in the acupuncture world in trying to understand meridians and try to understand why tone point works. And it will be very good if we join in this debate as to the role of fascia. Fascia is the connective tissue around our muscle and around our joint. Right? And it is said, whenever we have muscle pain, is it actually the muscle pain or the fascia pain? Okay, there's some food for thought for all of us here. Right? When we put in the needle, we always say the muscle is gripping the needle. Right? The muscle is gripping the needle. The host has spotlight. The muscle is gripping our needle. That's why we get a dirty. But the latest development indicates there is the fascia that is gripping the needle. Interesting. And they have found that this interconnecting tissues is from top to bottom, right to left in the arm. And here I show you some of the lines. And the superficial, I want to talk a bit about the superficial back line. I'm going to finish the superficial back line. And if you look at that line, the interconnecting from the Achilles tendon, from BL60 area, right up to the scap. Don't you think it looks like the bladder channel? Yes. Now I can understand why we put needles around BL60 or in tongue system 7701, it can treat the neck because the fascia connects here. I've always wondered why 7701 so far away can treat the neck. So this is a bit on the future of. Yes, okay, I'm finishing. Thank you so much for staying up with me. And the
the more I learn, sometimes I feel the more I do not know. So I continue to learn, and I encourage everybody to do so. And don't worry about what system, as long as the system works. I used to think that you know, I used to think that I want to be this master, a dedicated master. But now I think I need to be a mixed martial art fighter. Running a clinic is like street fighting. We need all the skills in order to solve complicated diseases today. So thank you very much for staying with me. I will do my best to answer your questions, and I look forward to seeing everybody in India. All right. I'll be in India, in Mumbai, in April, mid-April. Okay then. Bye bye. Thank you so much, Dr. Vishuddhi Lee. I wish we could have some more time to listen you, but unfortunately, this is really an excellent subject which you dealt with us. And a few of our friends, they want to know whether is there any basic book available on. So, is there a book available, or you prescribe any basic book to be read by, just to have an introduction of this? Yeah. You go to Google and you Google Master Tung acupuncture and or Google we can find out. Free download. I have plenty of books. Actually, the Acupedia, which I'm very proud of that effort to have combine all the books and put it into clinical notes, and this is a summary of I think about 40 to 50 books. But if you want to start it, Google is a good place to start, and there are many YouTubes and books on this as well. Thank you so much. Now the people they must have got the answer. So obviously there are books available on, and in case they are interested, so you have just put some interest, the flame, ignited the flame in those people. Now looking forward to see you in Indore also, Dr. Vishuddhi Lee, and we'll definitely like to have some more interactions with you. Thank you so much. Thank you so much for your kind deliberations. Now our next session is डॉक्टर अंतिम कुमार जैन और हमारे डॉक्टर रूमी बैराम जी, वो कुछ बातचीत करना चाहते हैं. एंड कुछ हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने ये कहा था कि वो दे वांट टू हियर फ्रॉम डॉक्टर रूमी इन हिंदी. सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अंतिम कुमार जैन, प्लीज ऑर्गेनाइज दिस सेशन. धन्यवाद सर. पुनः मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रूमी बैराम जी का, जो कि आप सबकी डिमांड पर फिर से हमारे साथ जुड़े हैं. और आप सबके मन में बहुत सारे कुछ विचार हैं महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल को लेकर. और इस समय हमारे साथ देश विदेश के बहुत सारे एक्यूपंक्चर के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं, और वो चाहते हैं कि हम किस तरह से इस काउंसिल के माध्यम से जुड़े. तो मैं डॉक्टर बैराम जी सर से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा एक्यूपंक्चर काउंसिल के बारे में बताएं, और जो लोग महाराष्ट्र में एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए सर आप हमें पुनः मार्गदर्शन दें. नमस्ते मेरी. सॉरी मैंने सबने इंग्लिश में बात खाली किया, थिंकिंग के इंटरनेशनल स्पीकर वगैरह है, तो इसीलिए सबको अंग्रेजी अच्छी तरह से समझ में आएगी. लेकिन काफी सवाल आ गए मेरे को कि पब्लिक हिंदी में जानना चाहती है. तो मेरा पहले पूछना है कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके पास जो इसके ऊपर मैं दोहरा सकूं? हाँ सर, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जो लोग महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर की, तो वो अपने ही सिस्टम में किस तरह से महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो डिफरेंट स्टेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें किस तरह से करना चाहिए.
जो लोग महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हमारा एक्ट है वो महाराष्ट्र के लिए है। जो लोग महाराष्ट्र के बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये किसी को मत बुला। रजिस्ट्रेशन लेने से क्या होता है कि अगर उनको महाराष्ट्र में आके प्रैक्टिस करना है या कुछ एक्टिविटी करनी है तो वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन और एक रजिस्ट्रेशन लेने का बेनिफिट एक ही होता है कि आज सारे हिंदुस्तान में एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र रिकॉग्निशन नहीं है। तो अगर कल किसी ने लीगल एक्शन लिया वगैरह लिया तो एटलीस्ट आप ये तो दिखा सकते कि भाई मेरी कसर नहीं है, ये स्टेट में अगर लॉ नहीं तो मैं क्या करूं, मैं तो महाराष्ट्र में रजिस्टर हूँ, सो मे बी मे बी आई एम नॉट द लॉ। तो वहां का लोकल लॉ माइट गो इन द फेवर ऑफ प्रोटेक्शन, और यही चीजें ट्रिगर कर सकती है रिकॉग्निशन के बारे में सबसे बड़ी चर्चा है। तो एक तरह से आप सेफ है कि यू आर रिकॉग्नाइज समवेयर, और अगर आपका स्टेट के अंदर लॉ नहीं है तो वो आपको रोक भी नहीं सकते। और कोई प्रश्न? हाउ कैन आई क्लियर? यस सर, क्लियर। आप भी अपने कुछ क्वेश्चंस हो तो हमसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो आपने क्वेश्चंस को प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। सर एक स्पेशल क्वेश्चन था कि जब किसी को महाराष्ट्र में कोई है और वो किसी तरह के एक्यूप्रेशर के सर्टिफिकेट कोर्स को कंडक्ट कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्यूप्रेशर की फील्ड में, तो क्या दे आर ऑल्सो अंडर द महाराष्ट्र काउंसिल एक्ट? Anybody and everybody practicing acupuncture, acupressure, cupping, magnetotherapy, ये सब चीज महाराष्ट्र एक्यूपंचर एक्ट के अंदर आ गई है। तो एक्यूपंचर एक्ट जो है ये स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन के हिसाब से है। तो महाराष्ट्र में आप ये नहीं कह सकते कि मैं खाली एक्यूप्रेशर करूं और मैं एक्यूपंचर नहीं करता हूँ, क्योंकि सबको एक यूनिफॉर्म नॉलेज के हिसाब से एक्ट में किया गया है। तो एक्यूप्रेशर वाले को भी लाइसेंस की जरूरत होती है, इसके बिना करना एक तरह से इलीगल है। थैंक यू सर। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र काउंसिल का एग्जामिनेशन नहीं दिया है, तो वो चाहते हैं कि क्या फिर से इस तरह की कोई एग्जामिनेशन होगी जिससे वो क्वालिफाइड होकर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर सकें? हमारा एक्ट के अंदर ये एक ही बार एक ही दिन में पूरी एग्जाम लेने के लिए दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं एज पर दी एक्ट ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन अगर समझो काफी लोगों की अपील आती है, उनको काउंसिल को तो अपील भेज दीजिएगा, तो मे बी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्पेशल कंसेशन शायद दे सके दोबारा वंस मोर के लिए। लेकिन आज हमारे हाथ में ताकत नहीं है, वी कैन नॉट डू इट टिल द अमेंडमेंट इज डन इन असेंबली। थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन कि क्या जिस तरह की एग्जामिनेशन हुई और उसके बाद जो लोग एज ए एक्यूपंक्चर के प्रैक्टिशनर्स बने, तो वो एज ए थेरेपिस्ट वर्ड यूज करेंगे या डॉक्टर वो यूज करेंगे, या वो अपने आप जब किसी को ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको कोई सर्टिफिकेशन दे सकते हैं ट्रीटमेंट का? नंबर वन, एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर्स कोई भी डॉक्टर शब्द नहीं यूज कर सकते। उनके लाइसेंस के ऊपर आएगा RAP, दैट इज रजिस्टर्ड एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर्स, और रजिस्टर्ड होने के हिसाब से ये लोग लीगली महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन द वर्ड डॉक्टर कैन नॉट बी यूज। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जो लोग सर दूसरे स्टेट से हैं, उस स्टेट्स के लिए आप क्या हमें निर्देश देंगे कि हम देश के विभिन्न राज्यों में किस तरह से इस काउंसिल प्रक्रिया कर सकते हैं? और चूंकि एक्यूपंक्चर एक्यूपंक्चर एक ग्लोबल सिस्टम है, जिस तरह से आपने एक यूनिक सिस्टम महाराष्ट्र में तैयार किया, क्या हम इस तरह का देश के विभिन्न प्रदेशों में स्टार्ट कर सकते हैं डिफरेंट? हमें यूनिटी चाहिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है यूनिटी। कोई भी स्टेट होगा वहां के सब एसोसिएशन को एक सिंगल बैनर के अंदर आना हुआ चाहिए, विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी पर्सनल प्राइड एंड पर्सनल गेन। ये सब लोगों को
अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहिए, 2, 3, 4, 5 जो एकदम डेडिकेटेड है एक्यूपंक्चर के लिए, जो अपना समय दे सकते हैं, खुद का पैसा भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत रात दिन का मेहनत होती है। जो आप लोगों के बीच में कोई पॉलिटिकल पहचान होती है तो वो भी आपके बेनिफिट के लिए आती है। ये करने के बाद आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का नंबर दिखाइए, 5,000, 10,000, 15,000 जो भी प्रैक्टिशनर है, और आप लोग गवर्नमेंट को पेटिशन डाल सकते हैं कि जब महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एक्यूपंक्चरिस्ट एग्जाम देके प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमें क्यों डिप्राइव किया जाता है? हमारा कोई कसूर नहीं है, हम प्रैक्टिस करने के लिए रेडी है, हम लोग एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए रेडी है। गिव अस वन गुड रीजन व्हाई आवर स्टेट शुड नॉट रिकॉग्नाइज एक्यूपंक्चर। वही हिसाब से पेटिशन जाना चाहिए पेशेंट्स के मार्ग से भी, कि महाराष्ट्र के अंदर जो लोकल पेशेंट्स है वो लोग एक्यूपंक्चर के मार्ग से सस्ते में विदाउट साइड इफेक्ट अच्छा इलाज ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमारे स्टेट के अंदर क्यों नहीं है? तब ये महाराष्ट्र मॉडल लेके आपके हाथ काफी मजबूत हो सकते हैं। तो आप लोगों को इसके पीछे पेटिशन डालने से प्लस थोड़ी पॉलिटिकल पोल करके कोई भी आपका लोकल एमएलए एमपी आपको सपोर्ट करता है तो वो असेंबली के अंदर चर्चा होनी चाहिए। यदि चर्चा हो सकती है तो आपका स्टेट उसके अंदर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है आज की तारीख में, और हम महाराष्ट्र वाले लोग आपको मदद करने को पूरे रेडी है, लेकिन आपको वो सब मेहनत नहीं करना है जो मैंने किया है। तो हमारा काउंसिल में काफी मेहनत करना पड़ा है। वी हैव टू डू नॉट ओनली एक्ट बट वी हैव टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, हमें सिलेबस बहुत काम करना पड़ा है, जिसके लिए मैं महाराष्ट्र काउंसिल के मेंबर्स के भी काफी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ये सब लोगों ने मदद किया है। तो महाराष्ट्र इज वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ और उसका आप आराम से रेप्लिका कर सकते हैं, और हम लोग आपके साथ हैं, कभी भी कुछ भी साथ चाहिए वी विल गाइड यू, बट द मूवमेंट शुड बी फ्रॉम योर साइड। मेहनत आप लोगों को करना होगा, और यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये शब्द इज वेरी एप्लीकेबल। थैंक यू सर। कुछ लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन कि हमने महाराष्ट्र काउंसिल का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, तो क्या हम एज ए ऑफिशियली प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके बाद में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? और ऐसे ही कुछ लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र काउंसिल के एग्जाम को क्लियर करने के बाद किस तरह के नए कोर्सेज अपडेशन होंगे, इट इज जस्ट लाइक सीएमए प्रोग्राम, तो हम अपने नॉलेज को अपडेट कर सकेंगे। देखिए, जो लोग ने महाराष्ट्र के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन दी और पास हो गए और महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करने वाले, उनको कुछ भी फिक्र नहीं है, बिकॉज दे आर लाइसेंस्ड एक्यूपंक्चरिस्ट। अगर किसी ने उनको तंग भी किया तो दे कैन अप्रोच द काउंसिल एंड काउंसिल विल रिप्लाई ऑन देयर बिहाफ। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमारे पास ये क्या फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन, हमारे पास 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। एक जो है जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर्स है, जो अपनी मेहनत से प्रैक्टिकल नॉलेज से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनको थियोरेटिकल नॉलेज जो एक्चुअल क्वालिफाई का है वो नहीं है। दूसरा है जो हम लोग कॉलेज चालू कर रहे हैं या डिप्लोमा 2 साल का रख रहे हैं और डिग्री 4 साल की आने वाली है, पहला डिप्लोमा आ रहा है। तो वो लोग राइट फ्रॉम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी जो भी नॉर्म है वो लोग परफेक्ट सीख के बाहर आएंगे। तो मेरा अंदाज क्या है कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें उनको भी उसी लेवल पे लाना चाहिए। उनकी मजबूरी था कि कॉलेज से नहीं, तो इसीलिए वो नॉलेज ले नहीं सके। तो काउंसिल क्या करेगी, अभी हम लोग की चर्चा होगी वापस, द काउंसिल मेंबर्स विल डिसाइड। यहाँ पर हम लोग सीएवी प्रोग्राम इसे बनाएंगे जो सिलेबस को कवर करते जावे, इसके वजह से जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर्स है 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उनका भी नॉलेज इक्विवेलेंट होना चाहिए जो क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर्स का है। तो इसीलिए ये लोग को रेगुलर सीएमए प्रोग्राम्स करना चाहिए। तो हम लोग टेक्नोलॉजी का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल के सब लोग अपनी क्लिनिक बंद करके उड़ के बम्बई आ रहे हैं, और इतने लोगों को 7-8 हजार आदमी को हम लोग को बम्बई में अकोमोडेट नहीं कर सकते। इसीलिए वी विल बी डूइंग ऑल्सो ऑनलाइन कोर्सेज, वी विल होल्डिंग वर्कशॉप्स, हम लोग लोकल एरिया के लिए भी करेंगे, बट वो सब रेगुलराइजेशन और जो नॉर्म्स है वो सब काउंसिल बनाती जाएगी। और काउंसिल का एक ही मतलब है कि हमें सब लोगों का नॉलेज बढ़ाना है, परंतु अगर प्रैक्टिशनर नॉलेज खुद नहीं लेना चाहता है तो दैट इज हिज फॉल्ट।
Any other questions, sir? लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से स्टेट काउंसिल है ऐसा ही सेंट्रल काउंसिल भी प्रिपेयर किया जाएगा क्या? क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज जितने भी होते हैं जस्ट लाइक एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, उनका सेंट्रल काउंसिल है, तो हम क्या एक ऐसे काउंसिल को भी आगे जाके आप फॉर्म करेंगे कि जिससे एक सेंट्रलाइज काउंसिल बने एक्यूपंक्चर के डेवलपमेंट के लिए? आज की तारीख में सेंट्रल काउंसिल खाली 2 स्टेट का ही है, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। लेकिन हम लोगों की कोशिश चालू है, हम लोग की पैनल भी बनाई हुई है, ये लोग दिल्ली में गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है, वहाँ डॉक्टर रमन कपूर इज लीडिंग इट, इज सपोर्टेड बाय myself, Dr. Lohiya, Dr. Debashis Bakshi, Inderjit Singh, Gantiyat, तो ये कमेटी ऑलरेडी फॉलो कर रही है, काफी एडवांस स्टेज में है, और वो डॉक्टर रमन कपूर उनका फॉलोअप चल रहा है। लेकिन अभी कोविड आने से 2 साल सब बातें बंद हो गई है, बट उम्मीद है कि वापस से रिवाइव होगी। और सिंस महाराष्ट्र का मॉडल स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है, सेंटर में भी हमारा नियमन होगा, और आई थिंक वेरी सुन शायद सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें रिकॉग्निशन दे देगी ऑल ओवर इंडिया। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे मन में विचार थे जिनके बारे में बहुत ही सरलता से हम सबको बताया, और आपने अति व्यस्त समय में से पुनः समय निकालकर हम सबको जो महाराष्ट्र काउंसिल के बारे में कोई डाउट से उनसे अवगत कराया। तो मैं आज के इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि हमें यूनिटी की जरूरत है, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर बीबी लोहिया सर भी कहते हैं कि सबसे अच्छी जो पैथी है वो सिंपैथी, कि सारी पैथीज को एक साथ जोड़कर हम काम करें। ऐसा ही हमने आज एजीपास के माध्यम से किया, और जिसमें देश की एक्यूपंक्चर की विभिन्न संस्थाओं ने हमें सहयोग दिया। हम आशा करते हैं कि आप सबका सहयोग हमें सदैव हमेशा मिलेगा। हम आप सबके मार्गदर्शन में, सहयोग में एक्यूपंक्चर विधा को एक नया रास्ता और एक नया मार्ग दिलाने का प्रयास करेंगे। तो मैं एजीपास की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल जी, एक्यूपंक्चर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान के अध्यक्ष,